My father's way of showing me love is a backhanded compliment. बोलेंगे अरे वो मिश्रा साहब मिले थे वकील कह रहे थे बड़ा अच्छा काम कर रहा है. It's easy for me to compliment another woman, but it's so hard for me to compliment another man. I would say I love you, man. वो थोड़ा सा ना we would back-ended make it cool. The closest person I am to probably right now is my wife, and I couldn't share a bad day with her. जानकी had never seen me cry ever. तुम खत लिखते हो यार. मतलब 6-7 खत तो मुझे तुमसे मिले हैं, जानकी से शायद इतने नहीं मिले हैं. I love you. I love you too. हाल ही में एक सीरीज आई थी द रोमांटिक्स, जहाँ पर आदित्य चोपड़ा ने एक कमेंट मारा था, एक डायलॉग कहा था कि हमारी कंट्री के अंदर सुपरस्टार वही होता है जो हर माँ का बेटा होगा, हर बहन का भाई होगा और हर कॉलेज गर्ल की फैंटेसी होगी. जब मैं सुन भी रहा था वो मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा था, वो है नकुल मेहता, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं एंड समवन आई रियली रियली लुक अप टू एंड एडमायर. एंड या नकुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू. आई नो ये कॉन्वर्सेशन हम वैसे करते ही रहते हैं. आज आई थिंक सबके सामने ये कॉन्वर्सेशन हो जाएगी एंड आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू बिकॉज़ यू आर वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट मेन आई हैव मेट. थैंक यू फॉर कमिंग. निखिल, थैंक यू फॉर हैविंग मी. यू नो कि मैं कब से हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कब आपकी जिंदगी से थोड़ा वक्त मिले, कब मुझे अपनी जिंदगी से थोड़ा वक्त मिले और हम बैठ के बस बात कर सके विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी, जस्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स वर्ल्ड. एंड थैंक यू सो मच आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. पहले तो इंट्रोडक्शन के लिए पूछना चाहूंगा, यू अग्री विद व्हाट आई सेड? I don't know if I'm the right person to really answer this, पर I think मैं बहुत ही मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से आता हूँ, स्पेशली मैं जहाँ से आता हूँ, टेलीविजन, जिसके निर्माता, जिसके लेखक, जिसके आई थिंक नेटवर्क बॉसेस सब विमेन है ना. इसकी ऑडियंस भी ज्यादातर हमारी माएँ हैं. Yeah, there are, you know, more young women, I would say. Yeah. I think पिछले 11 साल में मैंने I've done about 3 shows now, and I have learned so much just being around all these wonderful women. Yeah. Right? और ये इसकी शुरुआत I think सिर्फ काम पे नहीं हुई. I think बचपन से मेरे रोल मॉडल्स हमेशा से कहीं ना कहीं, हालांकि anyone who wanted to be an actor, you know, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, I mean phenomenal role models, right? पर कहीं ना कहीं मुझे माधुरी दीक्षित को देख के लगता था कि जो ग्रेस और डिग्निटी और ब्यूटी उनमें थी, you know, अपनी अदाकारी में, क्या मुझ में वो आ सकती है, you know? And I think as a child मुझे समझ नहीं पड़ा था कि what about her was I so drawn to. पर कहीं ना कहीं क्योंकि पिछले 11 साल में इतना टेलीविजन पे काम किया है, एक आई थिंक मेरी जो ऑडियंस बन चुकी है, जो कि ज्यादातर माएँ हैं, including your mother and your मासी, इतना सारा प्यार आपके जो अराउंड है, उसको देखकर कहीं ना कहीं you yourself start reflecting. ये सारी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, बट उससे पहले ना एक हमारा सेगमेंट है called पिटारा निकाला है. हाँ. This is called unboxing boyhood. एक तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इतना पुराना डब्बा क्यों लिया? मेरा बचपन इतने साल पुराना था क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, मेरा भी इतना ही पुराना था. एक आपने जैसे माधुरी की बात की, वो है यहाँ पे. मेरा पिया घर आया. Oh, of course I remember this song. I think this was early 90s or 89. Yeah. We used to live in Andaman Nicobar, Port Blair. My father was posted there, and उनका साजन में गाना था, कौन सा था वो? शायर है. And she used to do this beautiful finger movement, right? I remember starting to do that. Then I used to do her dances. And yeah, my early memory of I think arts में जो रुचि थी वो इनके वजह से थी. कमाल है. So yeah, this is very close. Oh, Martina Hingis. This I shared with you. I used to have posters of Martina, and it's funny, growing up, I used to love Pete Sampras and Andre Agassi, and I wanted to be a sports person, but she used to be on my cupboard. Wow. And I think it was, of course,
she looked as beautiful as she did, but I think she was a phenomenal player. Absolutely. Steffi Graf was my hero growing up. So, yeah. इंटरेस्टिंगली मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट मेरे कबर्ड पे भी एक टेनिस प्लेयर था और थी which is सानिया मिर्जा. And for me it was just like, you know, there is one female Indian sports icon, so obviously I admired her for that, but also मुझे भी बहुत सुंदर लगती थी. तो टेनिस कॉमन है but this definitely is a memory यार. मतलब मैंने इतने सारे ऑडियो कैसेट्स I used to collect. झनकार बीट्स, I think tips used to come with. It used to be called special झनकार बीट्स. And I remember कुछ 40 से 50 रुपए के आते थे, 35 rupees I think back in the day, and I used to save money to really buy audio cassettes. But उसके अंदर did you also do, मतलब मैं mixtape. हाँ कि मतलब मैं तो जाता था कि जो ना म्यूजिक दुकानों पे कि जो ना ये गाने जो हैं and I used to have a list बनाकर. तो I've done a lot of this, and I also remember जब you know me and Janki started seeing each other. So I used to make तब CD आ गई थी market में. I had burned this CD for her, got it for her. I remember one of her first Valentine's Day, she recorded a rendition of Tumse Hi from Jab We Met on a computer and burnt it on a CD and gave it to me, which I still have. Wow. So I was like, yeah, just admitted to piracy on camera. हाँ बहुत म्यूजिक की बहुत की थी तब यार. तब पता नहीं था ना, मतलब कोई पता नहीं था. Oh, see, now we're digging deep. There's a Femina, there's a Debonair. So interesting story I have about Debonair. I didn't know what a Debonair was till one day. I think मेरे पिताजी नेवी में थे, तो he had gone away for, I think he was sailing. I was just rummaging through his stuff and I found this magazine, right? And I was so intrigued. And when I opened it, and I was also then mildly shocked. How does my dad have it? Right? That was going to be my follow-up question. Huh? Yeah, and I think it's only like a few years later जब मुझे समझ आया कि it's part of growing up, and I was quite scandalized when I saw it. You know, I saw 5 pages and I quickly shut it down. But this was my first introduction to. Back in the day, यार तब porn थोड़ी होता था. You know, life wasn't as easy as it is today for most youngsters. You know, you would see a cover and you would. I think उसके वजह से imagination बहुत अच्छी हो गई थी कहीं ना कहीं. You know, you'd find your own imagination, find your own stories to कि इसका क्या मतलब है. You know, there's so much the world didn't speak about, and you know, I want to. जैसे आपने बोला कि ना आपके एक you wanted to be a sports person. एक आपकी aspiration थी कि जो ना हाँ cricket, I would imagine. And of course, now after knowing you a little bit and knowing a little bit about you, you've come from a family of warriors. You know कि आपके फादर इंडियन नेवी में थे, जैसे आपने कहा. मैंने ये भी पढ़ा है कि 1971 के वॉर में भी थे वो कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी. एंड आपके great grandfather सब you know they come from this legacy of Rajput warriors. Correct. And for you to be a kid जो माधुरी दीक्षित को देखकर जो ना माधुरी दीक्षित के स्टेप्स करने की कोशिश करता है, how did this you know come about? You know, when I look back now, I think openly ऐसी बात कभी नहीं हुई that you need to be masculine, but I think a lot of us have हमारा childhood रहा है जहाँ मुझे याद है, and I can't remember mom dad कौन आसपास में, but very early on you were told that you know, don't be a girl, don't cry. You know, so that's my earliest memory of that girls are weak. And it's so unfortunate that और ऐसा नहीं था कि मैं ना perpetuating it. It comes equally from both. Correct. A lot of times out of ignorance, I think. हालांकि there are a lot of amazing qualities I got from both my mother and father. जैसे मेरे पिताजी, he may not be a quintessential feminist to look at. Sure. He's a military officer, but घर पे हम छुट्टी से आते थे तो खाना वो बनाते थे. जब हम बीमार थे रात को पट्टी वो करते थे. घर में खाना खत्म होता था टेबल साफ वो करते थे. So I grew up picking up all those things, realizing this is natural, right? I think जब हमारी शादी हुई and Janki's parents would come home and they would see me do all of this, they would sometimes like want to say, अरे तुम मत करो, we are here ना. And मुझे समझ नहीं पड़ता था क्यों, because I felt it was very, it's natural, right? पिताजी को देखा है, of course ये करना है. But a lot of things I think I also unknowingly learned from him, which is, while my father today is very emotional, I don't think he was ever vulnerable to share his failures.
And I knew there were failures. I knew there were hard times in the family. I knew there was a time when he took premature retirement from Navy because he didn't get that promotion which he was expecting. But it was never spoken about. We never discussed it as a family. And I feel उसके वजह से कहीं ना कहीं I realized कि जो मेरे failure है ना वो मेरे लिए है. दुनिया के साथ मैं शेयर नहीं करूंगा. सक्सेस है वो सब में बांटेंगे. फेलियर अपने है, तकलीफ अपनी है, प्रॉब्लम अपनी है. डोंट एवर शेयर, यू नो. मुझे the closest person I am to probably right now is my wife, and I couldn't share a bad day with her. When I came back from work, I would want to discuss about उसका दिन कैसा गया. When she comes back from work, she wants to share about her life. I don't want to share about a tough day at work. So I think all of these were just walls which have been built over the years. And पिछले 4-5 सालों में बहुत सारा काम जा रहा है to sort of unlearn and maybe sort of become better. बहुत relatable max जिसे कहते हैं. I also had so many of the same experiences, नकुल. मुझे भी मतलब आपको पता ही है मेरे बारे में. कुछ साल पहले मुझे क्लिनिकल एंग्जाइटी मुझे डायग्नोज की गई थी. तब जाके मुझे जो है ना, मैं थेरेपी में सच समझाऊँ जो आप बात कर रहे हो एग्जैक्टली मेरे जो है ना लिटरली थेरेपिस्ट के साथ यही बात हुई थी कि इमोशनल होना ये नहीं है कि तुम्हारे पास इमोशन नहीं है. इमोशनल ना होना ये है कि तुम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, यू नो. एंड दैट इज एक्चुअली being emotional. When you're able to be vulnerable, you're able to express, जो मैं कर ही नहीं पाता था. And you know, I want to talk a little bit more about that, Nakul, but क्योंकि हम बचपन की बात कर रहे हैं ना, तो बड़े होते हुए ये आपको कभी आपके दिमाग में नहीं था या जहन में नहीं था कि जो ना ये एक मेरी एंसेस्ट्री है, एंड इस एंसेस्ट्री का मतलब ये होता है कि मुझे एक तरीके का आदमी बनना है. आई थिंक कहीं ना कहीं क्रेडिट टू माई पेरेंट्स की उन्होंने अपने ड्रीम्स मुझ पर कभी नहीं डाले. Never for once did they say कि हमारा परिवार यहाँ से. My father takes great pride in, you know, he's written a coffee table book on our entire family lineage, जो 1200 century से अभी तक. And a lot of times, like, I've questioned myself, and I questioned him also. Like, the entire book is about our forefathers, right? Yeah. And this word, forefathers, right? There's very little mention of the ladies, of the women of the family. And then I have asked him, and then I've also realized there has been very little record of them because no one's ever kept a record because whilst they were important, they weren't the warriors, they weren't fighting, they were the silent ones, right? And I think I've been most influenced, like in your life of everything I've heard from you. Your mother's been such an important part, है ना? Absolutely. कहीं ना कहीं मेरी The most important. I think हम सबकी when you think of kindness, when you think of like absolute being selfless, it's your mothers. They are your role models, right? Yeah, So I feel कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में भी हमेशा there have been always women figures जिनसे मैंने चीजें ली हैं. Male figures से मुझे पता चला कि ये नहीं करना है. But women figure से पता लगा कि ये चाहिए मुझे. This is what I really get attracted to. I've spent 20 years with my wife now, 21 years of knowing her. Just learned so much from her. The way she shares, the way she gives, the way she loves, the way she is with Sufi. I'm just learning every day, and you start beginning to question yourself कि why can't you have the same heart, you know, she has or my mother has. And today I'm on a path to wanting to be them, you know, wanting to uncomplicate. आपने बोला भी है कि जो ना आपके पापा जब जाते थे, आपको शायद अपने टूर्स पे जाते थे, आपको बोल के भी जाते थे कि ना जैसे बहन का और माँ का ना ध्यान रखना, यू नो, द मैन ऑफ द हाउस, है ना. तो ये जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, हाउ डिड यू फाइंड अ पाथ टुवर्ड्स एक्चुअली इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार ये बर्डन है मेरा और मुझे जो ना वही वॉरियर बनना है, वर्सेस बीइंग लाइक कि मैं ना कुछ सीख सकता हूँ अपनी ना बहन से, अपनी माँ से. I think कहीं ना कहीं पॉप कल्चर और फिल्मों ने, you know, have just spoiled the definition of what it means to be a man. Yeah. And while Salim Javed were phenomenal writers, and I think Salim Javed, Bachchan Saab, that era of 70s really showed us what we shouldn't be. मत को दर्द नहीं होता, you know. And I think Bachchan's all his roles were such like, you know, like aspirational, and it fed into this image of what it means to be a man. Absolutely, yeah. Very true. I was a fan of Shashi Kapoor always, right? And no one is a fan of Shashi Kapoor. I was a fan of Shashi Kapoor. I was a fan Except of for the Shashi. women.
for the women. Yeah. But that was again just for the looks, you know. I thought Shashi Kapoor, जब अगर आप दीवार देखोगे, while Bachchan, you can't like take eyes Obviously. away from him. But the Bachchan works because the dignity That's- Shashi Kapoor's character brings. बिल्कुल. The truth, the dignity, the vulnerability, the Yeah. strength, and the quiet strength Yeah. which he brings. Unfortunately, women have to play that to us in real life, Yeah. right? I've always admired Shashi Kapoor, and in that sense, you know, what he brought. And I've seen all those qualities people around me have. My sister, meri maa, my mother-in-law, who I'm very, very close to. Yeah. I feel because women allow themselves, you know, allow you to come in and feel their world. Whilst I find it very hard कि असल ज़िंदगी में मैं ये कर पाऊँ, मैं स्क्रीन पे ये करने की पूरी कोशिश करता हूँ. तो like I was telling you, Ram Kapoor is such a feminist hero, right? Correct. And बड़े, I feel a lot of that is the learnings I've had, जो मैं अभी अपने किरदार में डालता हूँ. Like the nicest thing someone's told me about, I think this was in London या न्यूयॉर्क. मैं जा रहा था and एक महिला आई अपने बच्चे के साथ ही, and she said, I'm really very fond of you. Thank you for doing what you do. And she exchanged pleasantry. वो अपने रास्ते चली गई. वो 2 मिनट फिर से मुझसे मिलने आई. And she said, sorry, मैं एक बात बताना भूल गई आपको. He said, what I really like about you is the dignity with which you look at women on screen. Wow. I said, wow. ये मैं सोचता था, पर ये ऑडियंस तक बात पहुंच रही है और लोगों को फर्क पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है. And someone noticed it, right? I feel there is so much you can bring. Whilst popular notion ये है कि टीवी तो regressive है, mass medium है, आप you know रोज करते हैं तो creativity नहीं है. But I feel क्योंकि एक mass media है, आप इतना कुछ कह सकते हो अपनी ऑडियंस को, and it may or may not be part of the larger like the theme of the show. Yeah. You know, and I felt very validated उस दिन जब when someone recognized that. What did you learn very specifically from your sister and mother? और the reason I'm also asking this question is कि जो लड़के अभी you know बड़े हो रहे हैं, उनके घर पे अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से क्या कोशिश करें सीखने की? I feel I've seen मेरी माँ को मैंने हमेशा देखा है, she's always making space for others. सबकी feelings के लिए she's seeing कि किसी को बुरा ना लगे. Always taking care of everyone. And I feel that is such an important quality. Isn't that the only quality we should have? मतलब what is right or wrong? It is so relative, right? And it comes out of your own ego. It comes out of your own what you feel. I've learned that from her. From my sister, I have seen her going through so many life challenges and the kind of resilient human being she has become, right? And I feel if I was in her shoes, or अगर आधी चीजें जो she has gone through, I don't know if I would have the emotional strength to be able to take them on, right? So, I feel मेरी माँ एक ऐसी इंसान है जो मैं कुछ भी करता हूँ ना, उसमें कभी गलत नहीं देखती. उन्हें अच्छा ही देखती है. A mother doesn't have judgment for her children. A father still does, you know. Like जानकी के लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है. And it's a lot of healing work. पिछले 3 महीने like लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा अभी ये शो खत्म, अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो. जानकी से कोई नहीं पूछता अब क्या कर रहे हो, because assumed है कि वो तो बच्चे का ख्याल रख रही है. But there is even if it's not a focused attention, but there is कि अगला क्या करोगे. पैसे कमाने हैं ना, Correct. काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जानकी से कोई सवाल नहीं करता. आई फील मैं लोगों को समझा नहीं पाता हूँ कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम है. ये मैं किसी को बोल नहीं सकता. और लोग जानना भी नहीं चाहते. लोग पूछते हैं आपसे आप कैसे, हाउ आर यू डूइंग, एंड द ह्यूमन लाइक आई थिंक द मेल आंसर टू आई एम गुड मैन, आई एम गुड, व्हाट्स अप, आई एम गुड. एंड मुझे आई स्टिल फील लाइक निखिल, यू आर द वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल आई नो हु वुड like male influences in my life who would say I love you on a message, right? Like if I would say that to someone before I met you, I would say I love you man. वो थोड़ा सा ना we would back-end it, make it cool. Just to say I love you like I would say to my mother, it just would not happen because it just takes too much out and I don't know how to explain it. There's just, you feel so much like this load of कितना मुश्किल है कहना. पर अपनी माँ को कहना इतना आसान है, बहन को कहना आसान है, बाप को नहीं कह सकते.
But I think I've learned so much from you that you're able to share, like, you know, the last few conversations we've had, आपने आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बहुत intimate details, बहुत आराम से share किए. Men don't do that, and I find it so hard, you know. But I think I've got so inspired from that, and that I reached out to a very close friend recently and just asked him how are you. I'm missing you. I couldn't say that before. होता ही निकलता ही नहीं था. Earlier मैं ना स्क्रीन पे बड़ी आसानी से रो लेता था. जानकी had never seen me cry ever, and she used to keep saying ऐसे कैसे हो सकता है? How do you do this? You're faking it on screen. And I used to feel मैं कर सकता था क्योंकि वहाँ कोई नहीं जानता कि मैं रो रहा हूँ. It's the character who's crying, it's the actor who's crying, right? So those are my pockets. First of all, thank you, Nakul, for saying all of these very beautiful things. मैं actually काफ़ी emotional हो रहा था, but one of the reasons मैं आपको अपनी लाइफ में शेयर भी कर पाता हूँ, मैं सबके साथ ऑब्वियसली नहीं करता, as you would imagine. बहुत समय के बाद जिंदगी मुझे समझ आया है कि जो ना मुझे जो ना अगर ये स्पेस बड़े होते नहीं मिली थी ना अपने लड़के दोस्तों के साथ, ये मुझे भी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं स्पेस क्रिएट नहीं करूँगा ना तो फिर मैं कैसे बढ़ पाऊंगा आगे. जैसे अपने पापा के अपने जो बात की है, आई स्टिल, मेरे पापा ना अभी जब से रिटायर हुए हैं तब से वो मुझे ना फॉर सम रीजन ज़्यादा हग्स देने लग गए. तो ये मैंने बहुत एक मतलब फॉर मी ना मेरा रिलेशनशिप मेरे पापा का ऐसे रहता है कि पापा जब कॉल करते हैं तो मैं पूछता हूँ क्या हुआ बिकॉज कुछ हुआ होगा कि मुझे तभी कॉल करें, नहीं तो कॉल क्यों करेंगे पापा. मेरे पापा मेरे डैड सेम करते हैं. आई कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग, ही सेड ओटीपी चाहिए एंड आई सेड नहीं, ही सेड नहीं जल्दी बता मैं फिजियोथेरेपी में. आई सेड नहीं, जस्ट कॉल टू आस्क हाउ यू आर. ओटीपी ओके आई कॉल यू. एंड बिकॉज मैं यूजुअली फोन करता हूँ कि मुझे ओटीपी चाहिए, ही हैंडल्स अ लॉट ऑफ माय वर्क. सेम. तो मेरा भी जनक, लाइक आई हैव ऑलवेज फाइंड इट वेरी हार्ड टू हग माय फादर. वो है ही नहीं, मम्मा के साथ तो पूरा ऐसे झप्पी मार के ऐसे पकड़ के अपनी माँ का ना कि जना यू आर माय मदर, वो यू आर माय फादर वाली बात तो इतने मुश्किल से होती है. एंड ये जो चीजें मतलब क्यों नहीं कर पाते यार हम लोग लड़के, जो है ना बात ही नहीं कर पाते. मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि इतना बोलते हैं. हाँ ऐसा नहीं प्यार नहीं करते दूसरे के साथ, प्यार बहुत करते हैं, भाई भाई हर चीज रहता है हमारे अंदर, बट जब भी वल्नरेबिलिटी की बात आती है ना सब अपने अंदर ही रोक के रह जाते हैं. आई थिंक जो आपने अपने पापा की बात की, that there's so much gap in that hug. I understand that, क्योंकि while मेरे और मेरे पिता के बीच में gap नहीं है hug में, but the hug is also कि come hug me. I have to do this. And I'll hold him here and he'll be like, yeah, वही ना. and I'll hold on. I'm gonna hold you. He won't let me hold him, right? And in fun and games, we let it go. But my mother and my mother-in-law, I hold for a long time, and we feel each other's rhythm and heart. Or with my father-in-law, to utna bhi nahi. It's the side hug, right? And Yeah. I know he loves me because I love his daughter. But the biggest, I think, learning which मुझे पिछले 2 सालों में कहीं ना कहीं मिली है, after becoming a parent myself, that vulnerability also means having a lot of compassion for people who may not be able to express. Just because आज मेरे और आपके पास थोड़े और माध्यम हैं, थोड़ा और courage है to show और to share, हमारे पिताओं के पास तो वो है ही नहीं. And actually it is such a big handicap. They are struggling. So अगर आप उन्हें उस लेंस से देखें of not being able to, there's so much bottle inside, there's so much love to give, because there is, Yeah. but they don't know how to. So my father's way of showing me love is a backhanded compliment. Like whilst I know he's very proud of everything, I do, my sister does, my wife, he will बोलेंगे अरे वो मिश्रा साहब मिले थे वॉकले और some scientist friend of his and कह रहे थे बड़ा अच्छा काम कर रहा है. तो ऐसे आपने क्या कहा? मैं भी उन्हें अनकंफर्टेबल स्पॉट में डाल देता हूँ आजकल. तो ये हाँ ठीक कर रहा है, मतलब वही है जो घर पे करता है वही करता है, बट आई ऑल्सो नोज कि अंदर बहुत कुछ है, कहना चाहते कह नहीं पाते. और एक बार बाप बनने के बाद मैं ये समझ गया हूँ कि नॉट टू जज हिम, ही इज ट्राइंग एट दिस एज एंड इट्स अ ह्यूज डील. आई थिंक पिछले 2 साल में बाप बनने के बाद मुझे समझ आया है कि मुझे अपने आप को चेंज करना है फॉर माई सन, फॉर माई चाइल्ड. आई नीड टू चेंज, क्योंकि मैं देखता हूँ जो उसमें सूफी और जानकी में जो एक बॉन्ड है अनसेड,
And that is because Janki is so like physically holds and loves. And Janki मुझे बहुत बार कहती है कि why can't you just hold him and hug him? And I don't know why. And I think it's just the years of conditioning, right? नहीं, आई थिंक आई ऑल्सो, नकुल, आपको पता है मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ इन चीज़ों के साथ. इट्स नॉट ईजी. और जो है ना, जैसे फादर्स की बात कर रहे हो, एग्जैक्टली द सेम. मैंने मतलब मेरे माय फादर हैज़ एन ऑपरेशन नेक्स्ट वीक, एंड आई आस्क्ड हिम यस्टरडे कि मुझे जो है ना, मैंने वीक प्लान करना है, मुझे बताओ कौन से दिन पर है. तो इज लाइक क्यों? मैं कहा आपका ऑपरेशन हो रहा है, मैं नहीं आऊँगा क्या? Same. तो हाँ, मतलब कि Same. मम्मा का अगर ऑपरेशन होगा तो ये तो मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछेगी. सवाल नहीं पूछा जाएगा. हाँ, तो ये क्या क्वेश्चन होता है? तो ये इज लाइक अच्छा तुम्हें आना है तो आ जाओ. मैंने कहा ये लाइक टिकट लगी हुई है मूवी की, आना आ जाओ. यार ये आपका ऑपरेशन हो रहा है, आई वांट टू टेक यू टू द हॉस्पिटल. ये मैं मतलब I want to be there. I want to be there for you. I don't understand. यार it's hard, you know. But as you said, I think as I'm also growing up, मेरी बहुत angst था अपने पापा के against, you know, not against, but for my father कि वो रहे नहीं मेरे पास, you know, he was out always. He's not really been around me, etc. etc. मैं जब हमेशा ये सोचता था कि ना मुझे अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला, अब मेरा ना थोड़ा पर्सपेक्टिव ये चेंज हुआ कि मेरे पापा को मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल नहीं मिला, बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अर्न मनी. And that's such a sad thing, you know, he never got the full joy of being a parent and a father, you know. It's very hard. So hard, can you very imagine? hard. But you know, I mean, again, coming back, Nakul, vulnerability की जो बात हो रही है, you also spoken a lot about, you know, how I think lonely ये process होता है. Over the last few years, Nakul, मैंने पढ़ना शुरू किया, and it's been very tragic to read about a lot of TV, specifically TV actors who have taken their lives, you know. और मैं ना हर मतलब 3-4 महीने में मेरे को पढ़ने को मिलता है, you know, different ages, and it is very, I mean, disconcerting, and you know कि यार ये क्यों हो रहा है, ये मतलब क्या चल रहा है. I just want to understand from you कि मतलब ये loneliness आपने भी देखी है अपने आसपास, अपने अंदर. How have you dealt with that? हाँ, मैंने फेस की है. I feel I mean the first kind of step I took in the industry was a film I did in 2008, and it tanked on the third day it launched, and मेरा phone नहीं बजा था 6 महीने तक. And I remember whilst I had a great support system around me, I was seeing Janki and I had some wonderful friends. I don't think I had the mechanism कि मैं share कर सकूँ even to my nearest and dearest ones that I was feeling what I was. There was an intense feeling of personal failure. There was an intense feeling of dejection, of rejection. तब समझ नहीं थी कि आपका rejection नहीं है. I remember I used to just sleep through the day on most days. I don't know if my parents saw it either. I didn't know what depression was then. How did I deal with it? I found spirituality, you know, right after. And कहीं ना कहीं जिंदगी का purpose वहाँ से मिला. And I think spirituality in a way grounded me and took me away from success or failure and said कि अपने लिए काम करना है, अपनी खुशी के लिए काम करना है. कहीं ना कहीं because the job becomes identity or becoming someone's girlfriend or boyfriend becomes identity. और जब वो सही नहीं जाता है वो फेलियर पर्सनल लगता है. मैंने जिंदगी में 2000 एपिसोड्स कर लूंगा मैं हिट शोज के, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ आई हैव लिव्ड. उस दौरान मैं किस किस्म के रिलेशनशिप्स बना पाया हूं, कि मैं कैसा फील कर रहा था, मैं घर पे कैसा था, अपने बच्चे के साथ कैसा था, वो सक्सेस या फेलियर है. यू नो, क्योंकि आज से 40 साल बाद ये सब कोई मैटर नहीं करेगा कि मतलब सक्सेस कितनी हुई आउटवर्डली. Like Janki and I were discussing, in her case, her father and my father, हमारी जो यादें हैं उनके साथ, my father spent a lot of time with me, but मेरी जो यादें हैं ना वो छुट्टियों से हैं. Where all he took us, the major life lessons he gave us, the letters he wrote to us. But माँओं की जो मेमोरी है ना वो तो रोजमर्रा की मेमोरी है. वो हमारे साथ थी, जब चोट लगी थी वो घर पे थी, जब दांत टूटा था वो लेकर गई थी, क्योंकि वो घर पर थी. Can I be that to my child today? Because if I'm only successful at work, like the real success will be, can I be emotionally there for him? Can I just be around where emotional support माँ के पास ना जाना पड़े, बाप के पास भी आ सके. I'm not that father who only goes on holidays and takes him to, like right now, football class or gym class. You know, मेरा challenge है, how can I be there in creative ways for him to feel loved, seen, protected? पर I think सूफी ने मुझे वो सिखाया है, because you know, एक चीज जो मैंने उससे सीखी है, मैं आपको बताऊंगा, it's really helped me as a man, is
since they don't know how to process large human emotions, तो कुछ भी छोटा होता है ना, जो उनका जो front of the brain है, it's not fully developed. So everything is a big emotion. He can't see Dada, suddenly he'll start crying. And suddenly he'll see me, he'll be happy, and then he'll move on to another thing. हमें भी तो ये mechanism चाहिए. हम ये mechanism को skip करके सीधा अभी तो happy, दुनिया के सामने happy बनना है. पर वो कितनी आसानी से कर लेता है यार. वो कितनी आसानी से रोकर खुश हो जाता है. मैं क्यों नहीं बन सकता ऐसा? किसने बोला कि अब मैं बड़ा हो गया? कौन है ये? और जबकि लोग बोलते हैं as an artist find your inner child. Correct. My inner child isn't right in front of me. I just have to replicate this behavior. I have to go back and be that. I have to be present. When he's with me, I'm his entire world, man. Why can't I be that? With like people in my immediate surroundings, with my family, with my friends, with my male friend. I can't, man. I still can't. Like, and it's not like my male friends don't reach out to me. Ki, yaar, let's trash it out. Let's talk it out. मैं आपको बता रहा था. A very close friend of mine who reached out to me from the US, I could speak to him and I tell him I miss him. And it was such a, like, there was a silence on both ends. It was literally like a Tassalli se conversation where we didn't know that why we are sharing so deeply, but we were. Yeah. It was, it was so beautiful that after 25 years, I could have this conversation with him. And it took us 25 years. It took us both to get married. It took me to have a child, to be able to reach that sense of vulnerability where he could share that he was not feeling good. And I could hear him without being, और क्या हो रहा है? You know? And that's beautiful. I feel far more powerful. I feel this is the masculine trait we're talking about, right? Yeah. तुमसे सीखकर मैं सीखा हूँ ये कि ये ठीक है, ये कूल है, ये कर सकते हैं. तुम खत लिखते हो यार. मतलब 6-7 खत तो मुझे तुमसे मिले हैं, जानकी से शायद इतने नहीं मिले हैं, हाँ ना? तो इतनी अमेजिंग चीज़ है यार ये. मतलब हम एक दूसरे से क्यों नहीं कर सकते? और मुझे करना है. मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी ऐसे नहीं जीनी है जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं. आई शुड बी एबल टू हैव अ मीनिंगफुल ओपन रिलेशनशिप विद देम एंड आई वांट टू डू दैट. मतलब आई फील लाइक आई एम फेलिंग इन लाइफ बिकॉज आई कांट शेयर एंड देन आई सॉर्ट ऑफ से कि पर किसने पूछा ही नहीं. एक साइकिल है जो आप तोड़ पाते हो, मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ, जब तो पहले आई थिंक वही ना, किसी न किसी को तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा. अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे कोई with Janki I still am to some extent with my parents. होता नहीं है, and there's not like so much time you have in life, right? I want to talk a little bit about women, in your life and overall, Nakul, ki you're also an actor, you're in the industry, you're working with beautiful women, and you have been with the same girl, and same woman for the last 19 years, which is not very common. And आजकल तो मतलब almost मेरा भी मतलब 17 साल का relationship है, और मैं भी जब किसी को बोलता हूँ it's same story also. हाँ, exactly, anomaly है. मैं भी college में मिला था, हो गया था यार, यही है, and I'm very happy. And of course we've gone through so many phases together. What made you so sure that this is who you want to be as a man in love? When I met Janki for the first time, of course there was this like instant attraction. I won't hide that. But it was when I was 18 years old. But my first thought wasn't at that age should have been, can I date her? Yeah. Can I go out with her? It'd be cool. My first thought for the first time in my life was, if I marry her, I clearly remember this. If I marry her, my life will be sorted. I don't know where it came. मुझे नहीं पता कहाँ से आया. It's not like I had some noble intentions at that point, or I thought like that. Yeah. Something in me told me, my intuition told me that there's something about, permanency with this one. And I chased that feeling. Yeah. We also grew up together. I wasn't an actor. I was modeling then, she wasn't a professional singer. Yeah. I feel kahin na kahin, we grew up together, and I've got so much from her. I've learned so much from her, and how she allows me, and I hope I allow her individual space. That more than being, of course, like a couple and in love and all of that, kahin na kahin, we are each other's biggest cheerleaders. Yeah. About wanting to grow as individuals. And then at the back end of it, being a family or being together. Like when we look back, we feel we've never been happier. And sometimes we question how. Like it wasn't like we weren't happy before. I feel also we were never the traditional man-woman in a relationship. I was going to come to that actually. When we started dating each other, I mean, we both weren't working, but in 3-4 years of the relationship, she was paying more income tax than I was earning in a year. Wow.
It was never the traditional. She comes from a very well-to-do family. I'm from a service class background. When we got married, I didn't have a job. My bank savings were under 1 lakh. She decided to trust in the person, right? She's never made me feel less of a man because I am not successful, and there have been many, many parts of my life where I haven't been. She's never pushed me to be a husband or a provider in a relationship. In fact, when we were dating, वो मुझे घर छोड़ती थी, and then she used to drive home. If we used to go out for a date, जिसके पास भी उस दिन पैसे थे, they used to pay. ऐसा कभी था ही नहीं कि अच्छा you're a man, you have to do it. And I think in a lot of ways, it was in such unsaid ways, she's taught me to be the equal partner and a receiving partner. And I think I'm the more receiver in the relationship. She's more of a giver. I also want to talk about, when it comes to women, obviously आपने अपने उस पे भी लिखा है बायो के अंदर your mother's favorite TV star. Your mother's favorite TV star. But ये एक ना इमेज आपकी इमेज भी मत यू वेरी मच लिव अप टू दैट कि जो ना कि मदर्स को जितनी भी इंडिया के अंदर लगता है कि अब आप आदर्श लड़के हो एक ना यू आर द मैन फॉर देयर डॉटर्स एंड ऑफ कोर्स यू आर मैरिड बट यू आर द आइडियल काइंड ऑफ अ मैन. What do you think, either in your characters or in your personal life, आपने जो भी एनालाइज किया होगा ऐसा क्या है that you bring on the screen कि all the mothers in our country are looking at you and saying यार ऐसा लड़का होना चाहिए. So your mother's favorite TV star is a bit of a credo and mission statement in life क्योंकि मुझे ये पता है कि like young women who might sort of enjoy watching you right now, they'll grow up and they'll have different choices. But if you get a mother's heart, you're sorted for life. आपके अगले 40 साल सफल है क्योंकि एक तो ना सिर्फ आपको ऑडियंस मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, which is just, how do you even, that's not what you came to the industry for. This is just a huge bonus, है ना? So it comes from there. But मुझे लगता है कहीं ना कहीं, I think why probably women relate to the characters I've played, I don't think I can take all of the credit. A lot of the credit is मैंने जो आई थिंक पात्र चुने हैं अलग अलग शोज में, कहीं ना कहीं वो पात्र मुझे भी रेजोनेट हुए बिकॉज दे हैड अ लॉट ऑफ फेमिनिस्ट क्वालिटीज. बट आई थिंक द व्हाई मे बी विमेन रेजोनेट विद इज आई फील, मैंने हमेशा से देखा है कि जिस तरीके से जो कमर्शियल या मेल हीरो होता है ना, जो स्टार होता है हमारे फिल्मों में या टेलीविजन शोज में, हमेशा इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हीरोइज्म एंड कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हीरो ऐसा होना चाहिए, वे दे टॉक दे वॉक, इट शुड बी वेरी हीरोइक. मुझे हमेशा से लगता था कि हीरोइक वो होता है जो अपने आसपास के लोगों को, आपके जो जैसे इन अ केस ऑफ अ टीवी शो लाइक जो योर को एक्टर्स है, योर अदर कास्ट मेंबर्स, ही कैन मेक देम फील बेटर, ही कैन मेक देम फील मोर, ही कैन मेक देम फील सीन, है ना. मुझे हमेशा से ये समझ थी कि वो हीरो होगा या वो हीरोइक होगा. आपने जो बोला फेमिनिस्ट किरदारों के बारे में, बहुत मिसअंडरस्टूड वर्ड है अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली लड़कों में. हाँ, फेमिनिज्म मुझे जो लगता है कि यार एक्चुअली हमारे लिए भी बेटर है कि जो ना अगर हम फेमिनिस्ट बनने की कोशिश करें और फेमिनिस्ट बने तो हम एक्चुअली जो अपने बर्डन कम कर रहे हैं दूसरों को स्पेस देकर, हमको भी जो ना वी आर गिविंग आवरसेल्फ द स्पेस टू हैव सेल्फ लव. जो हमको बार बार ज़बरदस्ती बोला गया है कहीं ना कहीं कि जो ना तुम्हें यही करना है, ऐसा ही बनना है, वही करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. आज जो हमारी बातचीत भी हुई है उसमें से ये रियलाइज़ होता है कि यार इफ़ यू जस्ट लेट गो एंड थोड़ा अपनी फेमिनिन साइड को भी एक्सेस करो, इतना आपको ज़बरदस्ती ज़रूरी नहीं है हमेशा सोचने की जो ना कि ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पैसा कहाँ से आएगा, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि मेरा रोल क्या है यहाँ पर वगैरह वगैरह, वर्सेस जस्ट फाइंडिंग आउट हु यू आर एज अ पर्सन. और वो कब कम होगी जब आप अपने स्पेसेस दोगे सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की. तो ये मेरी समझ है, बट आई जस्ट वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, आपको क्यों लगता है कि आपको फेमिनिस्ट बनना चाहिए, आपके कैरेक्टर्स को फेमिनिस्ट होना चाहिए, और क्या एडवांटेज है लड़कों को? आई थिंक आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट आई रियलाइज कि जो जनरेशन से हमारी कंडीशनिंग आती आई है, एंड वी बीन ब्लेमिंग आवर कंडीशनिंग कि बी अ मैन, टफन अप, टेक केयर ऑफ योर लाइफ. आई होप नॉट टू पास दैट ऑन to my child. I need to be a feminist so that
he can have the space to do everything I have found it so hard, to be able to share, to be able to express, to be able to cry. It's taken me all these years. It's the first time I think, Nikhil, ever in a sort of, because we are being recorded, whilst it feels such a personal chat, that I may have let my emotion down, and we both were tuned. We could feel it. It's never happened because you're not supposed to be that person. I don't want Sufi to grow up to be this man who's fighting all these challenges. I need to be a feminist so he can be more in touch with who he is. यार अगली जनरेशन के लिए जो लड़के जिन पे प्रेशर डाला जा रहा है, कैसे उनको समझाएं कि दिस इज नॉट जस्ट अ प्रिविलेज कॉन्वर्सेशन, और सबके लिए इम्पोर्टेंट है. सबको कहीं ना अपने आप से प्यार करना पड़ेगा एज अ बॉय, एज अ मैन. आई थिंक इसका सोल्यूशन है स्टार्ट विद योरसेल्फ. स्पेशली क्योंकि हम आर्ट्स में काम करते हैं, जिस तरीके का काम हम डालते हैं स्क्रीन पे. आपने और मैंने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी कही तसल्ली से, जो सज्जन ने लिखी थी, आदमी ने लिखी थी. आई कुडंट बिलीव इट कि एक आदमी ने कहानी लिखी. आई वुड हैव एक्सपेक्टेड इट कमिंग फ्रॉम अ वुमन. आपने कही, राइट? व्हाट आई गेट टू डू ऑन बड़े अच्छे अगेन इज जस्ट माय गुड फॉर्च्यून. आई फील दीज आर द रोल मॉडल्स वी नीड. तो हम अपने जरिए ये बात अलग किरदारों से कह सकते हैं. हमारे पास वो प्रिविलेज है. आपके पास क्रिएशन का प्रिविलेज है. आप ऐसे किरदार लिख सकते हैं, बना सकते हैं. जब बात होती है ना कि फेमिनिज्म की, आजकल स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स, आई फील वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग more vulnerable male characters. It's beautiful. Yeah. So I think we can. It's not a nuanced conversation. It's not a privileged conversation. You and I can make the difference. I'm very hopeful. I'm very optimistic. After आज की conversation के बाद तो I'm also really hopeful. And I think since we are on such a wholesome note, we have like a couple of wholesome sections. Okay. We are calling it the shout out section. Okay. Where हम चाहते हैं कि आप ना जो आपकी जिंदगी के अंदर मेल फिगर्स हैं या आसपास मेल फिगर्स हैं, या फिर जब स्क्रीन पे देखें जिनका आप नाम ले पाए. Okay. वार्मेस्ट हगर. My closest friend Alex Sangal. Oh, I've known him for 25 साल से जानता हूँ उसे मैं, and it's just the best. Yeah. A guy who's a great listener. Again, another friend of mine, Nishchay Gogia, really listens. A guy around whom you feel safe. Is the person I'm sitting with right now, Nikhil. ये ना थोड़ा मुझे मेरे को यही लग रहा है कि ना मैंने अपने दोस्तों को बुलाया ना शो पे, तो इसमें आंसर मेरे नाम भी आएंगे. But it is, Nikhil, it's true. I mean, no one else I have felt safe to be as vulnerable and as honest in a conversation, and it's only because it's you, and you've allowed that space by being so open with your life, and how you share, and how you appreciate, and how you encourage, and how you uplift, and how you are just there as a fellow human. So thank you. Thank you, Nakul. I love you. I love you too. A guy you find sexy. Will Smith. Oh. Before that unfortunate accident happened. The most expressive man in your life. It was my Nana who I lost 6 months ago. He lived a beautiful life. You written a beautiful post about him. I remember. Yeah, he lived till he was 93 and a half. मैं और जिंदगी में ऐसे इंसान से नहीं मिला हूँ who has been so embracing of people and so curious about people and so interested in people. And he just accepted me for who I was. Beautiful. A guy who makes you blush. मेरा एक दोस्त है मंत्रा. I'm sure you know him. Of course, yeah. I think Mantra is such a beautiful, compassionate, gentle, loving, embracing, and I've also worked with him as now he's been a director to me. I've just felt so like a child, the way he is, the way he embraces, That's sweet. everyone. So I'd say that's a beautiful quality a man has, man should have. A guy you worked with whose smile lights up the room. Gajraj Rao. I've worked with him, he's directed me in 2 of the most important things I've done in my life, and just beautiful. Gajraj is my favorite. Yeah, he's amazing. So beautiful. Such a beautiful person. Such a beautiful person. A guy you find really funny. I really enjoy Veer.
He's not a friend. I know of him as an artist, and I think he's a wonderful storyteller. And lastly, a guy whose mind fascinates you. मेरा एक बहुत ही close friend है अजय सिंह. You met him. Yeah, of course. Incredible. Who wrote too much, the poems. Much and Democracy, Too Much man. Democracy, yeah. Chat GPT can take anything, but they can't take over Ajay Singh's mind. I think he makes me believe in my potential more than I believe in my potential. That's beautiful. So, yeah, Ajay. Wow, you did well in this section. Wasn't rapid at all. Yeah, मतलब this is मैं ना इसको ना slow rapid fire बोलना शुरू कर दूँगा. This is our final section is also a really like happy section. Okay. We have something called a compliment jar. We've got comments that have been on your Instagram that we've seen from men. Oh, nice. जो- Very few you'll find. It was tough to find men because most of them were from women. Why Suyash? Your kindness and warmth shine through in everything you do, whether it is through your social media posts or interactions with your fans. You make people feel seen and heard. You have a heart of gold and it is evident in the way you treat others. ये आपके लिए तो नहीं था? You're sure this was me? Nakul. Are you sure? Yes, very much sure. I can't believe it. Why have I not read this? And why haven't I replied to this? Because it takes so much compassion and courage for a man to be able to express this publicly. Yeah. It makes me feel very, very, very good. And I'm glad it reaches out to another man. Santosh Rathod, finally Nakul is back. His sense of humor and language is just so great. Replace Ryan Gosling, we want to see Nakul. Hey, just don't say it aloud. So wonderful, yeah. Nakul and Janki should make all the babies. How is Sufi so adorable? How many babies do you want to make now after hearing him? I have a job to go back to tomorrow. I really have to find time to do this now. He has everything what an actor needs. William. Wow, I just feel so bad that I haven't read these and I haven't responded to these. I love this. I'm jealous of how much my wife loves you. We all must acknowledge each other more, Yeah. You know, I find it women are औरतों के लिए कितना आसान होता है ना, like it's so easy for my wife to compliment someone else. Yeah. And it's easy for me to compliment another woman, but it's so hard for me to compliment another man sometimes. And I wish we can change that, you know. I agree. Yeah. Thank you so Nikhil, much for sharing your these. no. Thank you so much, Nakul, for your honesty. आपके realness जो बोलते हैं, I think बहुत रेयर है यार नकुल. आपको भी पता है you know कि यही मैं सबको बोल रहा था बीच में भी कि जना ये जो कॉन्वर्सेशन मैं नकुल के साथ करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है यही है हमारा शो. मुझे पता था, पहले से ही पता था, बट आई मीन आफ्टर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग. सबको करनी चाहिए जस्ट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. सो थैंक यू नकुल फॉर बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, एंड आई होप दैट इट ऑलवेज कीप्स ग्रोइंग. Thank you for being inspiration which I needed. Thank you for saying that, Nakul. And I think अभी मुझे आपको हक देना चाहिए. And unlike your father, hopefully, and unlike my father, hopefully, we will give each other slightly longer one. I hope. Thank you. Thank you so much. Thank you for being on Be a Man Yaar with Nakul Mehta today. If you like what Nikhil is wearing and if you like what I'm wearing, then you definitely must like, share and subscribe to our channel. ऐसे बहुत से conversations आपको सुनने को मिलेंगे and Nikhil's going to be headlining most of these. Thank you, Nikhil, for having me on, and please like, share and subscribe. It was it was so beautiful that after 25 years, I could have this conversation with him, and it took us 25 years. It took us both to get married. It took me to have a child to be able to reach that sense of vulnerability where he could share that he was not feeling good, and I could hear him without being और क्या हो रहा है, you know. ये मैंने उसे शुरू में बता दिया था कि भाई मुझे खाना पकाना नहीं आता, मैं बर्तन धो सकता हूँ. जब लोग मुझसे पूछते हैं वो योर फेवरेट एक्टर्स, मैं कहता हूँ शम्मी कपूर एंड दारा सिंह, तो लोग समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ. मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. मर्दानगी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी
हमारे खानदान में। अपने बाप को मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था। हमारी शादी कामयाब इसलिए रही कि हमें एक दूसरे से कोई फिक्स्ड उम्मीद नहीं थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं अपने वालिद जैसा बनूं। मैं अपनी अम्मी जैसा क्यों नहीं बन सकता?